कहाँ गए? कहाँ गए भाई? कहाँ कहाँ गए? गए? कहाँ गए? कहाँ गए? कहाँ गए? कहाँ गए? कहाँ गए? गाना प्लीज मत बजा, कॉपीराइट आएगा, कॉपीराइट आएगा। हाँ, ये मूवी है ओवर द टॉप। हाँ, इस मूवी में बहुत कुछ है रैंट करने लायक, बट दिस मूवी एट द सेम टाइम हैज गिवन बर्थ टू so many memes that it has rightfully achieved the cult status. अब तक तो यार इतनी बार रोस्ट हो चुका है ये मूवी, बाय नाउ इट्स I'm pretty sure it's called a burned one. लेकिन फिर भी you guys wanted to see it get roasted further, so here it is. शुरू करने से पहले आई हैव सम वेरी गुड न्यूज। नोटिस किया कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन पूरे चैनल का हुलिया बदल गया है एंड वी क्रॉस्ड 2K subs. Wow, just wow. Do you know what this means? Finally I'll be able to annoy 2000 of you at the same time. Well, hindsight में maybe it's not a good news to you because good and bad are subjective and free will is an illusion. We all are living in a simulation where we are pre-programmed to make certain life choices or feel something a certain kind of way. None of this matters. It's all programmed. None of anything matters. Oh, forget it. So, on this happy note, let's begin. If you have seen Kuch Kuch Hota Hai, this movie becomes easier to follow because this is basically KKHH behind the scenes. Not lying, Karan Johar made this movie just so that he could put heaps and heaps of references to his earlier movie which was a blockbuster. ए राहुल और मेरी प्रेम कहानी अधूरी रह जाएगी। ये जोक था। था तो I don't like jokes. I don't like you. It's like him outside in the traffic yelling, "Hey, have you seen Kuch Kuch Hota Hai, right? I." Everybody knows about this supernatural phenomena that occurs in this movie, right? The mom, the Hawa, and the thing where she feels her son come. Sweet home! Come home, God. So mom only gets that tingling feeling when bada beta comes home. She doesn't even bother about the little one. Nobody loves me. Even though he was the miracle child. कि तुम भाग्य की रेखाओं से लड़के जन्मे हो। No wonder he had such pent up anger that he spent all the time in the gym, getting ripped, singing क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ on loop. इतने पतले कैसे हो गए? I mean, look at this. He tries to do a Shah Rukh Khan here and fails miserably. बहुत कमजोर हो गया मेरा पुत्र। In the mom's favor though, बड़ा बेटा हेलीकॉप्टर से उतरता है which is not only noisy as hell but also borderline irritating for a middle class person like me, so वो एक चीज़ हो सकती है. But then again, they sent Rahul to London for studies and they sent Rohan to a boarding school in Woodstock, Missouri. Oopsie. But देखो ना, he became this hot piece of but still won't get his photo taken as an adult. बचपन से अटेंशन नहीं मिलने के कारण रोहन का दिमाग नार्सिसिस्टिक जूस से भर चुका है. What can I say? I'm just the best. ये जूस आपको बीमार, बहुत बीमार बना सकता है. He is so ignored by his family that he can be standing right there, still makes you miss Rahul more. रोहन को देखकर राहुल की याद आती है। हर फैमिली के सबसे छोटे सिबलिंग के साथ ही होता है ऐसे. Proved hence. Moving on to my favorite character in this movie, Anjali, who plays the same role she played in कुछ कुछ होता है. अभी तो बाल भी बड़े हो गए हैं, but नशे सेम है. Nothing's changed there. Proof चाहिए. Okay. ये कितना हैंडसम है। No, the audio isn't muted. It's fine. It's just कि इतने हाई पिच में सिर्फ बैट्स को ही सुनाई देता है. Oh, hello, Mrs.
sprightly. Oh, hello, sugar. Oh, hello, they. I'm pretty sure that's racist, but let's not go there. Lovely. The main reason I like her is because she's the main villain of this movie, the troublemaker, the conflict creator. You know how much I love toxic women characters like this. How dare you? Look at her, flipping her perfect hair, rocking that beautiful smoky eye, creating benchmarks of beauty casually Egypt ka chakkar kaatte hue. Without her, there will be no story. She's the chaotic evil in the chaotic evil of all Bollywood films. That is K3G. Speaking of chaotic evils, the child bully grows up to be this hot mess to compete with Rohan's hotness. वरना मूवी में कपलिंग कैसे होगी, है ना? Just imagine if Rohan was still fat, not PH80. Pretty condescending. Fat. फिर तो ये बुली उसको भाव ही नहीं देती. Tell me how it was. चंदू के चाचा के प्लान की तो चट जाती ना चटनी. Yeah, try saying that out loud. I like it. ये दोनों ऑटोमेटिकली बड़े होके भूल जाते हैं कि कभी इनमें माया एंड मोनिशा साराभाई जैसा केमिस्ट्री था. How tacky. No, they are from Chandni Chowk. इस हिसाब से देखे तो बेस्ट कपल अवार्ड इन दिस मूवी गोज टू मिस्टर एंड मिसेस रायचंद. कह दिया ना, बस कह दिया. ये टॉक्सिक भले ही हो बट एटलीस्ट हमेशा मैचिंग कपड़े तो पहनते हैं. और ये उनका बेटा लंदन रिटर्न एंड बूमरैंग. कैसे कपड़े पहने हुए तुमने? नो ड्रिंकिंग, नो स्मोकिंग. तुम लोग छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमते हो. रिग्रेसिव है. मूवी का प्लॉट सब जानते हैं बट फिर भी मैं इन अ नटशेल बता देती हूँ. रायचंद इज रिच एंड हिज वाइफ इज sad most of the time. They have one adopted beta and one miracle child they ignore. माँ मुझे तुझसे ज्यादा प्यार करती है. Raichand has only one wish. Bada beta will handle business and marry his choice of Bahurani. See what I did there? No? Okay. Bada beta rebels and marries this annoyingly gorgeous and breathtaking... I mean annoying, just annoying person and breaks up with his family. He then moves to London, the staple abroad for Desi people in 2000s. Rohan grows up to be a snack whose introduction scene emphasizes on her rack. Rohan finds out the whole matter and decides to bring his brother back. Yes, we're to the rhyming section now. Internet और सही password से he finds out the भैया's location. कभी झूठ कभी डिसीट बट अल्टीमेटली राहुल फाइंड्स आउट हिज आइडेंटिफिकेशन. फैमिली रियूनाइट्स, थिंग्स आर हैप्पी एंड IMDb पर मिले 7.4. 3.5 घंटे की फिल्म है लेकिन देखना जरूर. स्टारिंग रोना, आरती, रोते हुए आरती, all patriotic songs you can think of. जया है, परंपरा क्या कौन सी परंपरा चल रही है? अंजलि 2.0, राहुल 2.0, एक हो तो बताओ. You know me. फैट शेमर, इनेबलर. बहुत कमजोर हो गया मेरा पुत्र. फैट शेमर इतने मोटे हो गए कोई कपड़ा फिट ही नहीं होता. प्लस इनेबलर. Y2K की टिकटॉकर दीदी. How dare you? And what are you doing, step bro? In Kabhi Roast, Kabhi Memes. Okay, cuties, that was it for this review. Let me know your favorite K3G meme template down in the comments below. Hit the like button because validation from internet people is my favorite kind of therapy. I cannot afford the real one. Let's be real. मैं गरीब हूँ. मेरे मम्मी पापा मेरे को गरीब पैदा किए. Okay, चलो bye. Did I just rhyme 7.42? देखना जरूर. God, छी.